Good morning, my dear students. Myself, Dr. Grish Goyal, Assistant Professor, Department of Agronomy, School of Agriculture, IIT University, Gwalior. Students, I hope you all are good and stay at home safely. मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे. Students, today I am going to start our subject Agron 514 Agronomy of Major Field Crops Kharif. MSc Agronomy, third semester. Students, so let's start our topic about cultivation of sunflower crop. Okay. So students, I will introduce all content one by one. An introduction, second climate requirement, next soil requirement, third seasons, next nutrient management, next hybrid varieties recommended for different states, next seed rate and method of seeding, next spacing and plant population. Students, before starting the topic, I want to telling you about some economic important of sunflower crop. Okay, जनरल्स के बारे में बताता हूँ. So students, sunflower was now toward period to 19th century as ornamental plants with its attractive flower after recognition that its seeds have high quality edible oil. Students, it is widely grown in many countries as an oilseed crop. Its oil is rich, understand oleic and linoleic acid. Students, 74% and hence useful to human health as these fatty acids are not produced in human body consumption of sunflower. Students, is considered as essential. Its use is associated with healthy hearts as sunflower oil hardly allow the blockage of blood vessels and do not result into higher cholesterol. Students, they also regulate blood pressure. The seed contain average of 28% oil, maximum 36%. Students, while kernel alone contains 44 to 45% oil, it is mainly used as a frying medium and for cholesterol purpose as aromatics. Students, the oil contains large quantities of vitamin E, stolin sequence and other alphabetic hydrocarbons, transphase and methyl ketones. Students, the sunflower was domesticated by USA as a commercial crop, although sunflower oil was first produced by Russian imperialists 1835. Students, the sunflower gets its name because its flower in inflorescence resembles the shape on sun. The sunflower seeds are also used as bird feed. Its male use of cattle feed. Its other uses include use the kernels or food without roasting. Beside making sunflower butter, sunflower whole seed bread, production of non-aleric rubbers. Beside used for various application as alternative to olive oil, as some varieties of sunflower produce oil more rich in oleic acid than even olive oil. Students, sunflower oil is used as body hair oil making, dyes and different plant part use against snake bites traditionally. So this is generally economic importance of sunflower crop. So first content है हमारा introduction. Okay. So students, introduction आइए हम लोग देखते हैं.
जनरली इंट्रोडक्शन उसका क्या है. So students, sunflower name the helianthus is derived from helios, meaning sun, and anthus meaning flower. It called as sunflower as it's follow the sun, always turning toward its direct rays. Students, it is important oilseed crop of country. Sunflower oil is most popular because of its light color, blade flavor, high smoke point, and high level of linoleic acid. With this good for heart patent, sunflower weed seed contains about 48 से 35% edible oil. सो स्टूडेंट दिस इज जनरली ये तो इंट्रोडक्शन रहा. ओके स्टूडेंट्स, जैसे हम आपको इन्फॉर्म कर दें, हम आपका इंटरेक्टिव वीडियो अपलोड करते हैं. तो स्टूडेंट्स उसमें हम लोग क्या किया करेंगे, जैसे इंट्रोडक्शन से हो गया, इंट्रोडक्शन से अगर कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है तो हम आपको फोटो करेंगे, आपसे पूछा करेंगे, तो आप उसका आंसर दिया करो. जब तक आप वो वीडियो पूरा देखोगे नहीं, सीन नहीं करोगे, जब तक आप लेक्चर आगे नहीं बढ़ पाओगे. ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर आप पूरा लेक्चर देखें, पूरा वीडियो देखें अंत तक. ठीक है, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट कंटेंट है हमारा क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट. ओके, सो स्टूडेंट्स मीन डेली टेम्परेचर्स फॉर आइडियल ग्रोथ इन इनिशियल स्टेज 18 and 25 डिग्री सेल्सियस. For later stage 21 से 25 डिग्री सेल्सियस it can tolerate cold temperature better than hot temperature, as it can germinate even at 10 degree Celsius. Hot temperature beyond 40 degree Celsius may reduce oil yield. Seed set it is drought tolerant and is successful is rainy season. Students, but require irrigation when grow in Rabi summer season. Those flowering is not governed by photo period. Students, it is short day plant and takes a longer period to mature in cold climate or at high altitudes up to 200 days. Students, in hot region it can be mature even in 70 से 80 days. So students, this is climatic requirement. Students, next content है हमारा सॉइल रिक्वायरमेंट. ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं सॉइल रिक्वायरमेंट. सो स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, हम लोग जैसे क्लाइमेट से भी कोई क्वेश्चन हुआ करेगा तो उससे भी हम आपका फुटअप किया करेंगे. ओके, सो स्टूडेंट्स इट कैन बी ग्रो in many any well drained soil with good water holding capacity, having natural pH 6.0 से 7.5. But it can be withstand salinity at the initial stage, but at late stage it needs a natural soil. So this is soil requirement. Students, next content है seasons. Students, sunflower can be grow although the year provides soil moisture. Irrigation is not a limiting factor. Sowing time should be decided in such a way that flowering and seed development stage do not consider with continuous rain or temperature above 38 degrees Celsius. Recommended sowing time for different states is given below. So like this table format, and there are different season kharif, rabi and summer and spring, and different state like Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Punjab, UP, Haryana, Bihar, West Bengal, Odisha. So first of all, first state Maharashtra, and there are different season kharif, rabi, summer. Then first season kharif, Maharashtra first season kharif July first week, rabi first half of November, and summer last week of January. Like second Karnataka, and season kharif July, rabi second half of September to first half of October, and summer January to early February. Next Tamil Nadu states, and kharif mid July,
रबी ईयरली नवंबर एंड समर मिड फरवरी। यही बात करें हम लोग आंध्र प्रदेश में खरीफ में तो मिड जुलाई टू मिड अगस्त। रबी की बात करें सेकेंड हाफ ऑफ नवंबर। समर की बात करें जनवरी टू ईयरली फरवरी। सो दिस इज स्टूडेंट सीजन, सो दे आर डिफरेंट सीजन एंड डिफरेंट स्टेट्स। ओके, काफ़ी अच्छी स्लाइड है, इसमें से भी कई सारे क्वेश्चन फुटअप किए जा सकते हैं और कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते भी हैं। ओके, सो दिस इज सीजन्स। स्टूडेंट्स नेक्स्ट का कंटेंट है हमारा न्यूट्रेंट मैनेजमेंट। स्टूडेंट्स, it is an exotic crop that need high nutrition. It may take around 175 kg nitrogen, 64-70 kg P2O5 and 200 से 225 kg K2O per hectare. Students, when around 14 to 15 quintal grains are harvested, the clearly indicated the sunflower require heavy fertilization. Students, initial application of 8 से 10 tons of manure per hectare 15 से 20 days earlier to the sowing. Students, it's essential for the success of the crop. Future fertilizers applying 60 से 80 kg per 80 kg nitrogen per hectare, 60 kg P2O5 per hectare and 40 to 50 kg K2O per hectare are necessary to be applied. Students, out of this entire phosphorus and potassium are applied as basal dose along with the 2/3 nitrogen and remaining dose of nitrogen and applied at the time of flowering. Students, the application of ZnSO4 zinc sulfate at the rate 10 kg per hectare along with basal dose of fertilizer can improve the seed yield and oil yield. Students, while foliar application of 2% borax on heads at the time of flowering may improve the seed setting and increases the grain yield. So this is nutrient management. इसमें से भी स्टूडेंट्स हम लोग कई सारे क्वेश्चन फुटअप कर सकते हैं आपसे। ओके, तो अच्छे से गौर से स्लाइड को रीड करिएगा। तो दिस इज न्यूट्रेंट मैनेजमेंट। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कंटेंट है hybrids varieties recommended for different states. So students, first variety BSH1 and KVSH1 mature in 90 से 95 days yielding 1500 kg per hectare having oil content of 42 से 44%. Next LSH1 for Maharashtra yearly varieties 85 से 90 days yield up to 1200 kg per hectare, oil content 39%. Students, next LSH3. Students, for Maharashtra medium duration 95 से 100 days yield up to the 1500 kg per hectare, oil content 40%. Next PSFH67 for Punjab yearly variety 90 से 95 days yield up to the 1500 kg per hectare, oil content 42%. So students, there are different hybrid varieties and different states, and so this is hybrid varieties recommended for different states. Next students, seed rate and method of seeding. So students, for quick germination and optimum stand establishment, especially under rainfall condition, the seed should be soaked in fresh water for about 14 hours followed by shape drying. The seed should be treated with therum and or kept on at 2 to 3 gram kg per hectare to protect from seed-borne disease. Students, line sowing using seed drills is the best method of sowing. The seed is often sown in the furrows behind country plowing. Students, hand dribbling in plowing for furrows is also common. Students, optimum sowing deep in 5 cm due to indicator of soil moisture or poor quality seed.
The stand establishment may be a problem. As such, a higher seed rate is often recommended to components. For such problems, recommended seed rate are given below, like cultivars and rainfall kg per hectare and irrigated kg per hectare. So two different, rainfed and irrigated. ओके, जनरल वेराइटीज़ में रेनफील्ड का कंडीशन में हम लोग करेंगे तो 8 से 10 केजी पर हेक्टेयर रिकमेंड होगा. अगर इरीगेटेड में करेंगे तो 6 से 7 केजी पर हेक्टेयर इरीगेटेड में. यहीं बात करें हाइब्रिड्स में हम लोग करें बात तो 5 से 6 केजी पर हेक्टेयर. वहीं बात करें इरीगेटेड में तो 4 से 5 केजी पर हेक्टेयर. ओके, सो दिस इज सीड रेट एंड मेथड ऑफ सीडिंग. सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कंटेंट है हमारा स्पेसिंग एंड प्लांट पॉपुलेशन. सो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं स्पेसिंग एंड प्लांट पॉपुलेशन. स्टूडेंट्स, स्पेसिंग एंड प्लांट पॉपुलेशन इन समर इन सनफ्लावर ग्रोइंग कंट्रीज ग्रो स्पेसिंग range from 45 to 100 centimeter and plant population from 60,000 to 250,000 plant hectare. In India, optimum row spacing vary from 45 to 60 centimeter depending on soil types as indicated below, like there are different soil type, light, medium, heavy, and different spacing and plant population per hectare. Spacing, so they are different spacing and different number of populations. So students, like first soil है लाइट सॉइल, इसमें स्पेसिंग मेंटेन करेंगे हम लोग 45 से 20 सेंटीमीटर. अगर बात करें प्लांट पॉपुलेशन की, इस सॉइल में इतनी स्पेसिंग में कितना पॉपुलेशन हमारा हो सकता है, तो है 1,11,000. यही बात करें हम लोग मीडियम सॉइल में तो इसकी स्पेसिंग होगी 45 से 30 सेंटीमीटर. और प्लांट पॉपुलेशन की बात करें हम लोग तो 74,000 प्लांट पॉपुलेशन पर हेक्टेयर. यही बात करें स्टूडेंट्स हैवी सॉइल की, हम लोग स्पेसिंग इसकी 60 से 30 सेंटीमीटर. और प्लांट पॉपुलेशन की बात करें हम लोग तो 55,000 पर हेक्टेयर. ओके, तो स्टूडेंट इससे भी कई सारे क्वेश्चन फुटअप किए जाते हैं आपके एग्जाम में. लाइट सॉइल, मीडियम सॉइल, हैवी सॉइल, स्पेसिंग डिफरेंट स्पेसिंग है, नंबर ऑफ प्लांट डिफरेंट पॉपुलेशन है. ओके स्टूडेंट, एक चीज़ बता दूं, आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मेज क्रॉप से, वीट क्रॉप से, सनफ्लावर से, सनफ्लावर से कई सारे क्वेश्चन इसमें फुटअप किए जाते हैं. ठीक है, तो आपको बता दूं, इस तरह के अगर क्वेश्चन फुटअप किए जाते हैं तो इस तरह के स्लाइड पे टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान दें आप लोग. ठीक है, सो Students, wider grow spacing of 60 centimeters is preferred for hybrid and longer duration varieties. For short duration and drought varieties, a grow spacing of 40-45 centimeters is adequate. Students, sunflower crop is highly susceptible to competition from more than one plant per hills. Maintenance of optimum plant population by judges thinning around 10 to 15 days after emergence. To maintain single plant per hills is essential for obtaining higher yield. Students, while thinning care must be taken to minimize disturbance to the plant left in the field, especially under rainfall condition. So students, this is spacing and plant population. तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कंटेंट है हमारा आउटकम. सो स्टूडेंट्स, आउटकम highly humidity accompanied by the cloudy weather and rainfall at the time of flowering results in poor seed set. Students, the optimum range of soil pH for this crop is 6.5 to 8.5 and performs better than groundnut in heavy black cotton soil of Karnataka and Tamil Nadu. So students, this is outcome. So students, this topic is finished, cultivation of sunflower crop. Okay, I hope आप इसे अच्छे से इस वीडियो को रीड करें, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार देखें.
क्योंकि मैंने जैसा कि आपको बताया है, आपका वेबिनार भी हम ऑलरेडी ले चुके हैं इसका, और वीडियो भी एक एक करके अपलोड कर रहे हैं। तो प्लीज़ जब भी हम आपका वीडियो अपलोड करें आप उसका वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि जब तक वीडियो नहीं देखेंगे और जब तक उसमें से आपको पूरे क्वेश्चन फुटअप नहीं करेंगे, उस वीडियो में, इंटरेक्टिव वीडियो में 5 से 6 या 4 से 5 क्वेश्चन फुटअप होते हैं, जब तक वो सही नहीं करेंगे उस वीडियो को आप पूरा नहीं देख पाएंगे। तो प्लीज़ आई होप आप इसे अच्छे से देखें, अच्छे से सुने, कोई डाउट लगे तो मेरे से पूछेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट, दिस टॉपिक इज़ फिनिश कल्टिवेशन ऑफ सनफ्लावर क्रॉप। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।